Hello developer. In today's video, we will cover identifiers in Java and rule for identifier in Java, and end of the video we will see some interview questions. So let's get started. Identifier. Any name any name in the program is an identifiers. I repeat, any name in the program is an identifier. It may be predefined class name, user defined class name, predefined variable name, or user defined variable name, predefined method name, or user defined method name. Let's understand with the help of example. हम सेम एग्जाम्पल यूज करते हैं हेलो वर्ल्ड का पब्लिक पब्लिक क्लास टेस्ट एंड पब्लिक स्टैटिक void main string x and system dot out dot println then hello world close method and close body. So ये हमने सेम एग्जाम्पल यूज किया है. यहाँ पे हमें देखना है हाउ मेनी आइडेंटिफायर्स आर देयर. हाउ मेनी आइडेंटिफायर्स are there. The first identifier here, predefined, it may be predefined class name, user defined class name. So here we have this class test. So this is our first identifier and it can be method name. So this is the method name. So this is our second identifier. It may be class name. So this is the string is a class. ये एक प्री डिफाइंड क्लास है तो इट्स ऑल्सो अ आइडेंटिफायर 1 2 3 एंड आर्क्स इट्स अ वेरिएबल नेम. तो हियर 4 सिस्टम ये भी प्री डिफाइंड क्लास है सो 5 दिस इज ऑल्सो एन आइडेंटिफायर. आउट इज अ वेरिएबल 6 दिस इज ऑल्सो एन आइडेंटिफायर. प्रिंट एलन इज अ मेथड नेम so 7. So here total we have 7 identifiers in this Java Hello World program. Do we have any rules and regulations to declare an identifier in the Java program? Yes. Rule for identifiers in Java. The first rule is A to Z. We can take any name with A to Z character like num or test, okay, ABC something. Then next rule, yeah, A to Z in the lower case like this one. Next rule, digit 0 to 9, okay, like num 1 2 3. This is also acceptable in Java. And next rule we have dollar. Dollar is also acceptable. And the last rule is underscore. This is also acceptable. Let's see some example, then we can understand better. और अभी हम प्रैक्टिकल भी इसे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे बट लेट्स अंडरस्टैंड हियर फर्स्ट. फॉर एग्जांपल into underscore total equals to 10. Is it acceptable? Is it a valid identifier? Is it a valid identifier? Yes, it's acceptable. It's a valid identifier. Underscore और character यूज कर सकते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. सेकेंड into हैज total equals to 10. Is it valid identifier? This one. Is it
वैलिड आइडेंटिफायर, देखिए आइडेंटिफायर क्या है, आइडेंटिफायर ये नहीं है, आइडेंटिफायर द नेम ऑफ द वेरिएबल, दिस इज द आइडेंटिफायर ना। सो इज इट वैलिड आइडेंटिफायर? नो, इट्स नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ देखेंगे रूल में, सो वी डोंट यूज हैश सिंबल। ओके, लेट्स टेक few more example. 3 into try equals to 10. Is it valid identifier? Is it valid identifier? Try is a valid identifier? No, it's not a valid identifier. क्यों? क्योंकि try एक reserve word है जावा का। reserve word क्या होते हैं? We will see in the upcoming videos. So it's not a valid identifier. Let's say take few more example. Into add equals to 10. Is it valid identifier? No, it's not valid identifier. Of course, add symbol is not acceptable. And last example is into integer. Integer equals to 10. Is it valid identifier? This int and this integer, basically int is a data type and integer is a class. ये एक class है जावा में, integer. Okay, so is it acceptable? Yes, it's a valid identifier. ट्राई प्रैक्टिकली हम अपनी आईडी पे चलते हैं और इन्हें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं. सो सिंपली आई विल जस्ट क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट and the name of this project is lecture 5. Okay, and create main, and quickly I'll use all here first into underscore total equals to 10. Yes, it's acceptable, we can print it, no problem at all. I can run it. And second, into if I take hatch total 10. Okay, no, it's not acceptable, it's not a valid identifier. Okay, and then let's try another. Into try equals to 10. Is it acceptable? No, it's also not acceptable. Okay, and then let's try into add equals to 10. It's also not a valid identifier, it's throwing compile time error, it's also not acceptable. एक और देखते हैं. Into integer equals to 10. Yeah, it's acceptable. Okay, I'll remove all those. So this is acceptable. If I print it, then we can see the output in the output display console here. Ten and 10. Okay, and next इंटरव्यू क्वेश्चंस. वैलिड आइडेंटिफायर, इसमें बताना है कि कौन कौन से वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं. num is a valid identifier or not? In similar way, 1 2 3 4 5 डॉलर जावा abc सम एंड रेस्ट ऑफ द अदर्स. तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. एंड इस वीडियो को ही पॉज करते हैं. आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन. विश यू ऑल द बेस्ट.